Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the population and community level. So let's move to the class part. So dear students, levels of biological organization. So we have studied number 1, atomic and subatomic level. Number 2, the molecular level. Number 3, we have studied the cell and organelle level. Number 4, we have studied the tissue level. Number 5, we have studied organ. And organ system level. Okay. And then we studied the individual level, which is also called as organism level. Here. And now, dear students, the 7th one is the population level. So, electrons, protons, and neutrons, their specific arrangement makes the smallest undivisible, non-divisible, indivisible particle of a pure substance, that is atom. 2 or more than 2 similar or different kind of atoms which are chemically linked with each other by ionic, covalent, coordinate covalent, or metallic bond, they form molecules. So on the basis of molecular weight, there may be the micromolecules or macromolecules. The specific arrangement of micro and macromolecules, they make the organelles, and the specific assemblage of organelles within the cell makes a cell. Clear? And similar kind of cells performing same function arranged in the form of loose tissue, loose sheets or groups or bundles, it forms the tissue level. Now, 2 or more than 2 different tissues performing a related function, it forms an organ, and 2 or more than 2 different organs performing a related function forms the organ system. And dear students, the different organ systems, they combine and perform a related function to form an individual or the whole organism. Clear? So this is, after that, there is the population level. So similar group of individuals or same species living in the same place
at the same time forms a population. Clear? तो एक जैसे इंडिविजुअल सिमिलर टाइप, जिसको हम कह सकते हैं एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जो एक ही जगह के ऊपर एक ही वक्त में रह रहे होंगे, सो दैट मेक्स अ पॉपुलेशन. तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है डियर स्टूडेंट्स, इट इज हायर देन द इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज कि इंडिविजुअल में जस्ट एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जबकि पॉपुलेशन में एक कैटेगरी के एक स्पीशी के मुख्तलिफ तरह के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उसके, वो एक जगह पर रह रहे हों एक ही वक्त के अंदर, सो इट मेक्स अ पॉपुलेशन. क्लियर? सो लेट्स हैव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, the number of rats in a field or the number of biology students in the class. क्लियर? तो इन दोनों एग्जांपल्स में देयर स्टूडेंट देखिए कि जो रैट्स हैं एक ही फील्ड के अंदर मौजूद हैं. रैट्स मतलब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स एक ही फील्ड में मौजूद हैं, मतलब कि एक बैक वक्त मौजूद हैं. सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ अ रैट, ऑफ रैट्स इन द फील्ड. या फिर ए जैसे बायो के स्टूडेंट्स, आप सिर्फ बायो और मैथ कंबाइन क्लास हुई, अब बायो के लेक्चर में अब सारे स्टूडेंट्स जो है वो चले गए बायो की क्लास में. सो ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट फॉर्म्स अ पॉपुलेशन ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स. या फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स वो एक ही क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, बायो के स्टूडेंट्स दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं. सो दैट मेक्स टू डिफरेंट पॉपुलेशंस मीन्स एट द सब्जेक्ट लेवल. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो पॉपुलेशन लेवल है, पॉपुलेशन की वजह से कुछ इसकी अपनी कुछ खसूसियात पैदा होती हैं. द पॉपुलेशन makes some special attributes which are called attributes of a population. मतलब कि अगर एक जैसे लोग एक जगह पे एक ही वक्त में ना रह रहे हों तो उनकी वजह से मतलब कि ये वो पॉपुलेशन नहीं बन सकती. लेकिन अगर एक जैसे लोग मतलब कि एक जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक वक्त एक ही जगह पे रह रहे हैं तो उनके इकट्ठे रहने की वजह से कुछ खसूसियात पैदा होती हैं जिनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. So dear students, there are 5 attributes of population which have been discussed in our book. So these are it is also important regarding short question attributes of a population के एक जैसे ऑर्गेनिजम्स के एक जगह रहने से जो खसूसियात पैदा होती हैं
जो एट्रीब्यूट्स पैदा होते हैं या क्रिएट होते हैं वो क्या हैं? नंबर वन इज जीन फ्लो। तो जीन हम डियर स्टूडेंट्स पहले डिफाइन कर चुके हैं। जीन बेसिकली इट इज द particular sequence or a specific sequence of nucleotides present on the DNA which is responsible for the production of a certain or particular protein. Clear? So that very particular nucleotide sequence is called as a gene. And gene flow. तो डियर स्टूडेंट्स अगर एक जैसे लोग या एक जैसे जो स्पीशी मतलब कि एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रहेंगे, सो उनके अंदर जो पॉपुलेशन लेवल क्रिएट होने की वजह से उनके अंदर जो जीन्स हैं वो फ्लो करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक पॉपुलेशन के अंदर जीन का फ्लो करना मतलब कि ट्रांसमिट होना एक ही पॉपुलेशन के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। सो इट इज द फ्लो of a gene or genes within a population. क्लियर? क्योंकि हम पॉपुलेशन लेवल को स्टडी कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के अंदर जीन किस तरह से फ्लो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द फ्लो ऑफ green eye color. क्लियर? लेट्स सपोज कि एक पॉपुलेशन है लाइक अभी पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, तो उसमें से लेट्स सपोज कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि जिनका आई कलर ग्रीन है, मोस्ट ऑफ देम दे पोजेस द आई कलर ब्लैक, और कुछ जो उसमें मौजूद हैं विद ब्राउन आई कलर और सम विद ग्रे कलर। तो डियर स्टूडेंट्स जो ग्रीन आई कलर वो जब 10% लोगों से मूव करके और दूसरे यानी कि उसी पॉपुलेशन की दूसरी जो मेंबर्स तक पहुंच जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द जीन फ्लो। या फिर उसी सेम कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी किसी दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन फ्लो। यानी कि किसी भी जीन का विद इन द पॉपुलेशन जो है वो मूव करना मतलब कि ट्रांसमिट होना, और ये किस तरह पॉसिबल है? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जब ये फ्लो करेगा। क्लियर? या इसकी एक और सादा सी मिसाल, लेट्स सपोज देयर इज अ फैमिली हैविंग आई कलर, उनके अंदर जो आई कलर है वो ब्राउन है, और एक दूसरी फैमिली है उसके अंदर जो उनके जो फैमिली के अंदर आई कलर जो है वो ग्रीन है। तो जब वो आपस में शादी करेंगे, सो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, लेट्स सपोज के उन जो ग्रीन आई कलर है वो डोमिनेंट है, तो उन जो ब्राउन आइज वाली फैमिली थी उनके अंदर भी ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट फ्लोज इन अ पॉपुलेशन, विद इन अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज जीन फ्रीक्वेंसी। जीन frequency means how much frequently an allele or gene is present in a population. In a population. मतलब कि लेट्स सपोज के यू आर सिटिंग इन अ बायोलॉजी क्लास और उसमें 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आई कलर ब्लैक है, और 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका आई कलर जो है लेट्स सपोज के ब्राउन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कौन सा कलर आई कलर वाले स्टूडेंट्स हैं? 50 में से 30 वाले, मीन्स के ब्लैक। तो ब्लैक आई कलर जो है या उसका जो जीन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। जो जीन ज़्यादा
तादाद में या जो एलील ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा एक पॉपुलेशन के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी, और उसको हम डोमिनेंट जीन या उसको डोमिनेंट एलील कहेंगे। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंटली कोई भी एक एलील या एक जीन एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक ही पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह की हम एज ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है? द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स in a population क्लियर, कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो एज ग्रुप्स हैं। लेट्स सपोज कि अगर 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से 100 में से 50 हैं जो कि 30 ईयर्स की हैं, और उसमें से 20 ऐसे हैं जो कि 40 ईयर्स की हैं, उसमें 10 ऐसे हैं जो कि लेट्स सपोज कि वो 50 प्लस हैं। सो इस तरह से हम ये 3 मेजर उसको एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। क्लियर? तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं या बहुत सारी ऐसी मेडिकल सिचुएशंस हैं, लाइक सम डिजीजेस दे आर रिलेटेड टू द एज के कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बच्चों तक महदूद हैं, जो हमारा लोअर एज ग्रुप होता है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि मिडल एज में होती हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द डायबिटीज़, जो टाइप 1 है डायबिटीज़, वो 40 साल से पहले होती है, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जो टाइप 2 है वो 40 ईयर्स के बाद होती है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो ये हमेशा 30 साल से पहले हो जाती है नॉर्मली। क्लियर? जो कि जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं एपिलेप्सी को। या अगर हम बात करें लेट्स सपोज के लाइक द अल्जाइमर्स जो भूलने की बीमारी है, वो आम तौर पर 50 से 60 साल और समटाइम्स 70 ईयर्स की एज के बाद जो है वो आगे कंटिन्यू करती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम डिफरेंट एज के ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली उनकी जो डिफरेंट डिजीज प्रेवलेंसेस हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं, या कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि एज ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ एजेस के अंदर, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस ओनली विल हैपन इफ देयर इज अ पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन होने की वजह से, एक जैसे मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठे होने की वजह से एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक एट्रीब्यूट पैदा होता है। क्लियर? नाउ अनदर एट्रीब्यूट इज देयर, that is population density. Population density. So gene flow, gene frequency, then age distribution, and now population density. तो density किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मास पर यूनिट एरिया। क्लियर? मास पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं दैट पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग पर लैंड एरिया, पर लैंड एरिया। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक मखसूस एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, तो 2020 तक जो है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, इट वाज द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल the population density of Pakistan in 2020
20 to 2021 was approximately 287 people पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर इस तरह से, फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर उसकी वर्थ 1 किलोमीटर अगेन। तो चारों साइडों से अगर 1 किलोमीटर एरिया हम जो प्लॉट करें तो उसमें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन, एक एवरेज पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट की गई थी, दैट वाज 287 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आने वाले वक्तों में इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड इंक्रीज। क्लियर? सो दिस इज, या इसकी एक छोटी सी मिसाल, लेट्स सपोज देयर आर 100 इंसेक्ट्स। हमारे पास 100 इंसेक्ट्स हैं जो कि कहाँ रह रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर। 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 100 मीटर स्क्वायर इधर से, 100 मीटर स्क्वायर इधर से, 100 मीटर स्क्वायर इधर से और 100 मीटर स्क्वायर इधर से। तो इसका मतलब हुआ उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि 1 इंसेक्ट पर मीटर स्क्वायर, उसकी क्या निकलेगी, 1 इंसेक्ट पर मीटर स्क्वायर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगी। तो पॉपुलेशन जो स्टडीज होती हैं, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इस तरह की स्टडीज, उसमें ये काम आती हैं ये चीज़ें। सो इट इज़ द एट्रीब्यूट विच इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ पॉपुलेशन, बाय स्टडिंग अ पॉपुलेशन। इसी तरह से एक और, द लास्ट attribute of population is population pressure. So population pressure is the stress, ये एक stress condition है which is brought by population density. Excessiveness, यानी जब पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेसिव हो जाएगी, मतलब कि जो पर पीपल जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल लिमिट से भी क्रॉस कर जाएगी, तो डियर स्टूडेंट्स उस वक्त क्या क्रिएट होगी, कंडीशन, एक स्ट्रेस क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। लाइक फिर इसकी वजह से डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि लेट्स सपोज कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर जैसे कि तकरीबन 300 के करीब लोग हैं और आने वाले 10 सालों में वो हो जाता है 300 से वो 400 पे हो जाता है। तो वो किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था जो कि पहले 300 लोगों को जो होल्ड करा था वो 400 पे चला गया। तो अब उसी हिसाब से फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसी हिसाब से जो बाकी जो फंडामेंटल्स हैं हमारी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज करेगी। सो इट विल क्रिएट अ पॉपुलेशन प्रेशर, मोर फ्यूल, मोर एनर्जी, मोर क्लॉथिंग, मोर फूड, एक्सेट्रा एंड मोर पॉल्यूशन एज वेल। Okay? So these are the 5 attributes of population which are only because of the together living of same kind of species at the same place at the same time. And finally, the next level is community level. So dear students, what is community? Different populations, or we can say different species living at the same place
in the same time means कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस या मुख्तलिफ स्पीशीज एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर जब रहेंगे, सो दैट वेरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, biological organization is called as the community level. Clear? And dear students, the communities are dynamic. Clear? The communities are dynamic if one population in a community increases, the other will decrease. क्लियर? तो जब एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है तो दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज करती है. सो इसी जैसे लेट्स सपोज के देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ लायंस और लिविंग इन द जंगल, तो वो लायंस क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं लेट्स सपोज ज़ीब्रास को. ठीक है, तो ज़ीब्रास की पॉपुलेशन उनके खाने से, उनके शिकार करने से कम हो रही है, जबकि लायंस जो कि उनके ऊपर पल रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी. So that is why the communities are called as they are dynamic. Dynamic का मतलब है कोई चीज़ रुकी ना हो, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती रहे, चेंजेस आती रहें. तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं. कभी शेरों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ज़ीब्रा की ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़ीब्रा की ज़्यादा होगी, तो जब ज़ीब्रा की कम होगी तो जो है वो लायंस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है. क्लियर? सो इन्वर्स हो सकता है इस तरह से. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़. Types of communities. So there are two types. Number one is simple community. It is a community having the community having less number of populations. Populations, clear? For example, the community under a fallen log. एक गले सड़े लकड़ के नीचे कुछ मुख्तलिफ तरह की आपको पॉपुलेशंस मिलेंगी, जो कि थोड़ी बहुत होगी, 4-5 होंगी मतलब कि तादाद में. अगर हम बात करें पॉपुलेशंस की, कुछ थोड़े बहुत इंसेक्ट्स, कुछ थोड़े बहुत डिकम्पोजर्स होंगे, वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं. तो लेकिन इसमें एक चीज़, एक इशू है, अ माइनर चेंज in simple community produces drastic conditions. Clear? मतलब उसमें हालात जो हैं वो बुरे हो सकते हैं और वो लंबे अरसे तक यानी कि वो कम्युनिटी जो वो इफेक्ट हो सकती है. जबकि अगर कम्युनिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, द सेकंड इज complex community it is the community having large number of populations. Clear?
और ये काफ़ी स्टेबल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जिसको हम जंगल कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं, और उसमें अगर एक आध बीमार होने की वजह से ख़त्म भी हो जाती है, तो चूँकि अगर वहाँ पर हंड्रेड्स की तादाद में पॉपुलेशंस हैं, तो उस फॉरेस्ट के ऊपर कोई ओवरऑल कोई इतना डिफरेंस या ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं वो थोड़ा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंपल कम्युनिटीज़। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैटेगराइज बोथ ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से 8 levels of biological organization we have completed: the population and the community level. So in this topic आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाना डियर स्टूडेंट्स, वो आमतौर पर जो देखा गया बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस तरह से होता है कि इनमें से कोई से दो, यूजुअली कोई से दो लेवल्स आपसे डिटेल से जो है वो पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन लाइक मॉलिक्यूलर एंड सेल लेवल, या फिर टिश्यू लेवल और द मॉलिक्यूलर लेवल, या समटाइम्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इसको। लेकिन मोस्ट फेवरेट जो है वो देखा जाए तो वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल जो है ये आमतौर पर ज़्यादातर पूछे गए हैं। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने इसको अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने ऊपर हेडिंग देनी है, उसके बाद तरतीब से इसी तरह से इसी सीक्वेंस से आपने इनके वो लेवल्स का सीक्वेंस लिखना है, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के जो आपसे पूछा गया हो क्वेश्चन के अंदर उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर? उससे पहले आपने इसी तरह से पूरी तरतीब उसकी सीक्वेंस वाइज बता जो है वो उसकी लिस्ट बना देनी है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो इसी से रिलेटेड आगे एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस, दैट इज लिविंग world in space. तो डियर स्टूडेंट्स, इस जब से ये कायनात जो है अल्लाह ताला ने बनाई, तो तब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वो इवॉल्व भी हो रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता करते 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 अब प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो शायद ही दुनिया को कोई ऐसा कोना हो कि जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना होते हों। सो आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते दुनिया के हर खित्ते के अंदर, इन एवरी पार्ट, इन एवरी स्पेस इन दिस वर्ल्ड, वो फील्ड है, इट इज अबाउंडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो द लिविंग वर्ल्ड is of enormous size, मीन्स के बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े साइज की है ये जो आजकल के दौर में जो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। इट हैज बिन reproducing and evolving since it was created। जब से ये बनी है तो उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके ऊपर जो लिविंग वर्ल्ड है वो रिप्रोड्यूस भी कर रही है और वो आगे मुसलसल चलती चली जा रही है। सो टुडे almost all parts of the world are
abound by the living organisms. क्लियर? तो दुनिया में जितने भी जहां जहां चले जाए, चाहे हम पोल्स पे चले जाए, पोल पे सबसे हार्श कंडीशंस होती हैं, वहां पर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, या हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें जो इक्वेटर के करीब हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जगह जगह पर, हर जगह पर, दुनिया के हर खित्ते में चप्पे चप्पे के अंदर जो है अब लिविंग वर्ल्ड पहुंच चुकी है। क्लियर? तो ऐसा समझा जाता था कि शुरू में जैसे ही ये वर्ल्ड जो है वो अपनी मार्ज़ वजूद में आई, मीन्स व्हेन इट केम टू इनटू इट्स बीइंग, तो तब से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनना शुरू हुए और वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हुए। शुरू में इनकी तादाद बहुत कम थी। आपको याद है कि आपने ह्यूमन पॉपुलेशन के हवाले से पढ़ा था इन ग्रेड 9 दैट इन चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि 10,000 साल पहले जो टोटल पॉपुलेशन इस दुनिया के ऊपर थी, ह्यूमन पॉपुलेशन, द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ 10,000 years ago it was just 5 million, यानी सिर्फ 50 लाख लोग थे इस पूरी दुनिया के ऊपर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ 10,000 years ago। ये साइंटिस्ट का एक मानना है, जो कि आप देखें सो ये 8 अरब के करीब करीब होने वाली है। सो इट्स अ ह्यूज 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 पॉपुलेशन। ये सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तकरीबन 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक एक एस्टिमेट है कि इतने डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं। हम नंबर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनकी काइंड्स की, उनकी टाइप्स की, डिफरेंट स्पीशीज की। क्लियर? जिसकी हमने फाइलेटिक लिनेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आगे चलकर हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि उसमें किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी मौजूद है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ द लिविंग वर्ल्ड, the distribution of organisms can be studied through biomes, यानी हम लिविंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पेस के अंदर, इन स्पेस, उसको हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू बायोम्स। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो दैट इज बायोम, दैट इज बायोम। तो हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। तो कम्युनिटी के बाद जो इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम और ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं बायोम्स, और फिर उसके बाद फिर सबसे हाईएस्ट में द बायोस्फीयर लेवल। क्लियर? सो बायोम्स, these are large regional communities which are primarily determined by climate, primarily determined by climate. Then the major plants which
decides the other plants and animals in that area. Clear? तो आइए इसको समझते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दी बायोम्स कहा जाता है लार्ज रीजनल कम्युनिटीज को, कम्युनिटी लेवल के बाद, ठीक है, ये बायोम्स. सो लार्ज रीजनल कम्युनिटीज, बड़े बड़े ये रीजन, खित्ते के एतबार से ये कम्युनिटीज होती हैं, जो कि प्राइमरली सबसे मेन चीज जिससे ये डिटरमिन की जाती है, दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा सा फर्क बताता चलूँ, आपको डेफिनेटली शायद पता भी होगा. तो वेदर कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन क्लाउड कवर, इन प्रेसिपिटेशन, इन हेज एंड इन फॉग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, के वक्ती तौर पर एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो आती है, उतार चढ़ाव आता है, बारिश और बादल और गर्मी और सर्दी और धूप, इस तरह की चीज़ों के हवाले से, ठीक है, टेम्परेचर के हवाले से, उसे हम वेदर कहते हैं. जैसे मौसम, जिसको हम सादा लफ्ज़ में मौसम कहते हैं. और क्लाइमेट ये लॉन्ग टर्म जो है, ये किसी भी जगह के ऊपर जब कोई टेम्परेचर प्रिवेल करता है लॉन्ग टर्म, यानी, और इसको प्रिवेल करने में जो प्रिवेलेशन है इसकी, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ये कई सदियों से किसी जगह का जो टेम्परेचर अगर एक जैसा रहे, उनका क्लाउड कवर ऑलमोस्ट उसका पैटर्न एक जैसा रहे, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें सहरा की, तो सहरा में आपको दिन के वक्त शदीद तपती हुई धूप मिलेगी. इसी तरह से अगर हम बात करें पोल्स की, तो वहाँ पर आपको हमेशा बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर मिलेगा. आप जिस मर्जी सीज़न में चले जाएं मई में, तो आपको हमेशा वहाँ पर ठंड ही मिलेगी, कूल एरिया. कश्मीर चले जाए, अगर अपने गिलगित बल्तिस्तान चले जाए, या फिर आप नारायण कागान चले जाएँ, सो दीज वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड. क्लियर, इट्स कूल क्लाइमेट. तो जो प्राइमरली कोई भी बायोम किससे डिटरमिन की जाती है, उसके क्लाइमेट से, फिर उसके बाद वहाँ के मेजर प्लांट्स से, और फिर जो मेजर प्लांट्स है वो डिसाइड करते हैं या वो डिटरमिन करते हैं कि दूसरे प्लांट्स कौन से होंगे और दूसरे एनिमल्स वहाँ पर कौन से मौजूद होंगे. लाइक let's have an example of biomes. For example, the forests, like the rainfall forests or the deciduous forests. क्लियर. तो ये बड़े बड़े जैसे पैमाने के ऊपर जो जंगलात होते हैं एक खत्ते के अंदर, उनको उनकी बात हो रही है. द ट्रॉपिकल, जैसे कि रेनफॉल में अगर बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो इक्वेटर के बिल्कुल करीब करीब होते हैं. इसी तरह से हम बात करेंगे डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वो भी इसी तरह से होते हैं. अगर दे आर अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल. एंड अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट्स, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे मौजूद होते हैं, ठीक है. इस तरह से डेजर्ट्स, डेजर्ट ये भी एक बायोम है. लाइक सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, दैट इज सहारा डेजर्ट, जो कि साउथ अफ्रीका वाली साइड पे मौजूद है. अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो चोलिस्तान, जो कि रहीम यार खान और बहावलपुर वाले साइड पे मौजूद है. इस तरह से थर जो है वो सिंध वाले साइड पे मौजूद है, ठीक है. सो डेजर्ट. इसी तरह से अनदर एग्जांपल इज द टंड्रा एंड ऑल्सो द ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स, क्लियर, जैसे कि जिनको हम पेस्चर लैंड्स भी कहते हैं, चरागाहें भी कहते हैं. जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीरिस्तान, ये इस साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे ग्रासलैंड्स मौजूद. दूर दूर तक आपको ऐसे घास ही नज़र आती है और दरख्त कम दिखाई देती हैं.
क्लियर. सो दीज आर लार्ज रीजनल कम्युनिटीज. अगर मैं डेजर्ट्स की बात करूं तो डेजर्ट का टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया, क्लाइमेट तो बता दिया. अब इसी में जो मेजर प्लांट्स हैं लाइक द कैक्टस, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो पानी को स्टोर करता है. अब इसी तरह से जो दूसरे इसी से मिलते जुलते जो प्लांट्स हैं वो यही डिटरमिन करते हैं दूसरे प्लांट्स को, तो वो भी यही खासियत रखते हैं, वो अपनी स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर पानी को स्टोर करने की काबिलियत रखते हैं. इसी तरह से वहाँ के जानवर भी, उनके अंदर भी यही खासियत है, वो इनके अंदर भी यही कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि वो भी पानी को स्टोर करते हैं. लाइक द कैमल, द डेजर्ट ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो वो भी पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है कई कई हफ्तों तक. क्लियर. सो दिस इज हाउ वी स्टडी द लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.